हेलो एवरीवन। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2025 के एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि एचएनबीयू ने कंडक्ट करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग केयर। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर सी। सेकेंड वन इज़ नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमिक patient centered method for providing nursing care. The first step of nursing process is assessment. Answer number C is correct. Subjective data is the information gathered from what patient verbalize or report. Then answer is C. Question number 4 is what is the following example of objective nursing assessment? Correct answer is answer number C. Then question number 4 is a nursing diagnosis differ from a medical diagnosis because it evaluate and effectiveness of medical intervention. Then correct answer is answer number D. Then question number 6 is well written nursing diagnosis statement is etiology, that is related factor. Then right answer is C. Then seventh question है planning phase of nursing process. The nurse will establish patient and expected outcome. Answer number B is correct. Question number 8 is characteristics should good and expected outcome ideally possess. The correct answer is answer number C, measurable, achievable, realistic and time bound. Then question number 9 is example of independent nursing intervention is administering and prescribed medication. So the correct answer is A, dependent. Then next is question number 10th, डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन. तो उसका जो सही आंसर रहने वाला है आंसर नंबर बी रहने वाला है. देन क्वेश्चन नंबर 11 इज implementation phase of a nursing process involved in documenting nursing care are provided. The correct answer is B. Then next is question number 12, accurate through documentation nursing care is essential for. Answer number B is correct. Then question number 13 is evaluation phase of a nursing process determine. The correct answer is answer number C. Then question number 14 is which of the following is a basic human need according to Maslow hierarchy. तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है सी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. देन क्वेश्चन नंबर 15, maintaining asepsis in critical nursing responsibility to prevent infection. Correct answer is C. Then question number 16, which of the following is a principle of surgical asepsis. तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है B. देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, when performing in head hygiene the single most effective way to prevent the spread of microorganism is washing hand with soap and water at least for 20 seconds. Answer is B. Then question number 18 is proper body mechanics are essential for nurses to prevent musculoskeletal injury. So the correct answer is C. Then question number 19, which of the following is a key element of effective communication between nurse and patient. तो करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है C. Then question number 20 is the concept of holistic nursing care. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आंसर C, addressing a patient physical, psychological, social and spiritual needs. Then question number 28, a 68-year-old male with a history of hypertension and hyperlipidemia is admitted with a complaint of sudden onset of severe chest pain radiating to his left arm. The priority nursing action the right answer is initiated oxygen therapy. Then next question number 22, which of the following is a common early symptom of heart failure. तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी, फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. देन नेक्स्ट
Question number 23rd. A patient with a chronic kidney disease is likely to experience which of the following electrolyte imbalance? The correct answer is hyperkalemia. Answer number A. Then next, the nurse is carrying a patient with pneumonia. Which nursing intervention is the most important? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इनकरेज पेशेंट ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइजेस. देन क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट विथ टाइप 2 डायबिटीज mellitus prescribed it metformin. The nurse should instruct the patient about which of the potential कॉमन साइड इफ़ेक्ट. तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए पेशेंट को बताएगी. तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग डीवीटी. तो जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी. देन 27 क्वेश्चन नंबर, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा एंड एक्सपीरियंसिंग एक्यूट एक्सबिशन एंड मेडिकेशन वुड द नर्स एक्सपेक्टेड टू एडमिनिस्टर. तो इसमें 27 का जो सही आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट देंगे हम. 28 क्वेश्चन नंबर का देखेंगे हम, फाइंडिंग असेसमेंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इज ट्रीमर्स एंड टैकिकार्डिया. देन 29 क्वेश्चन नंबर 29, patient with peptic ulcer is reportedly epigastric pain and relieved by eating. This is the most consistent with answer number is 29, duodenal ulcer. Question number 30 is, the nurse is caring for a patient following stroke. Which nursing intervention is crucial to prevent complication related to immobility? तो जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन सिम्टम ऑफ BPH इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्पेशली एट नाइट टाइम. क्वेश्चन नंबर 34, अ पेशेंट विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कंप्लेनिंग ऑफ अ जॉइंट पेन. Which of the following non-pharmacological intervention would be appropriate for a patient? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी. 33 क्वेश्चन नंबर, सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस इज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. क्वेश्चन नंबर 34, एनीमिया का साइन इसमें बेसिकली पूछा है. तो आंसर रहेगा सी, फटीग एंड pallor. Then next 35 question number, the nurse carrying a patient with wound is healing by secondary intention. It means the answer number is B. Then 36 question number, the key nursing consideration when caring for a older adult patient. तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आंसर नंबर सी. देन क्वेश्चन नंबर 37, patient with a gout is experiencing acute flare up. The nursing should anticipating administering which type of medication. तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. देन क्वेश्चन नंबर 38 इज, which of the following is a modifiable risk factor for coronary artery disease? Answer number C is correct. A patient with a new colostomy is concerned about the odor control. Which of the following nursing intervention would be most helpful? The correct answer is answer number C. Then question number 40 is, which of the following is a potential complication of uncontrolled hypertension is stroke? Right answer is C. Then question number 41 is, a primary focus of psychiatric mental health nursing is promoting mental health and treating mental illness. So the correct answer is C. Which of the following is a common defense mechanism characterized by attributing one's own unacceptable thought or feeling to another person?
The right answer is projection. Then question number 43. A patient experiencing a manic episode in exhibiting pressured speech, flight of ideas, decreased need for sleep. The priority nursing intervention is to the patient about engaging. The right answer is B. Provide a structured and quiet environment. तो इस वीडियो में 43 क्वेश्चंस हैं. बाकी के जो 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है. तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा और या फिर इसमें कोई और करेक्शंस हैं मेरे आंसर्स में, तो काइंडली मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं. और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू.